أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Translation. He created man from clay like that pottery, and he created the jinn from a smokeless flame of fire. So which of the favor of your Lord would you deny? He is the Lord of two sunrises, and he is the Lord of two sunsets. So which of the favor of your Lord would you deny? He released the two seas meeting side by side. Between them is a barrier, so neither of them transgresses. So which of the favor of your Lord would you deny? From both of them emerge pearl and coral. So which of the favor of your Lord would you deny? And to him belong the ships, so sails elevated in the sea like mountain. So which of the favor of your Lord would you deny? Sadaqallahul Azim.
Jazakallah. Ladies and gentlemen, dear students, please rise for the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Honorable, even because Hassan Iqbal will be online after 1 hour, inshallah. But in schedule, we have also kept his presentation. So, Honorable, we can say we are Honorable Minister of the Planning and Development, Hassan Iqbal Sahab, Honorable Minister Ismail Rao Sahab, Mushahid Hussain Sayyid Sahab, because he will also join 2:30. Honorable Vice Chancellor, University of Sindh, Dr. Siddiq Alur Sahab, all the faculty members, all the students, and also all the persons from media. I am thankful to all of you because you have also visited University of Sindh Jamshoro, and we have also, even we have some other conferences in the past. But to me, it is a good conference because we are discussing issues of strategic economic relations. Because before that, I also did my conference in 2016 on CPEC. Hassan Iqbal was also there. But we only, at that time, the situation was different as compared to now we have. So we are lucky that Ambassador Qazi Khalilullah Sahab cooperated us in this conference, and his role also is a key role, because without his active participation, active support, it was not possible. So I personally, I welcome Sir Khalilullah Sahab, Qazi Khalilullah Sahab to visit us in first time, second time in University of Jamshoro, and we, I also discuss some points that although we have signed different agreements with different organizations to organize such type of the conference in future. So Saint Qazi Sahab was kind enough that he has also consented that in collaboration with the University of Saint Qazi Sahab conference, organize this conference. And I also welcome Dr. Rafiq Ahmad Memon Sahab because today early morning Vice Chancellor got a call from Karachi, and there was an urgent meeting in Karachi. So he nominated Dr. Rafiq Ahmad Memon Sahab, Pro Vice Chancellor, Tata Campus. So on behalf of the Vice Chancellor, Sir Rafiq Memon Sahab will present his presentation and also conference. So let me to talk about the Pakistan-China relations, because when we say that in 50 Pakistan was the first country who recognized China, and even we continued supporting each other since last 73 years, China and Pakistan. But due to, as you know, the strategic economic relations between China and Pakistan, we have also some other stake players, especially in South Asia, where India, Pakistan, we also work together. So maybe because in 2016, 17, when I organized conference on CPEC, situation was a little bit different because at that time that the Hassan Iqbal Sahab, Planning Minister, he was working very hard, and we Chinese were also working very hard. Then again, third party, what I personally believe, the role of USA, even supporting India to control China, or maybe some others and other players that we have also, just like we listen about the Russia-Pakistan cooperation, even so the area was some little bit low, so we have some different concepts at different times. Even the China we consider the best friend, because since last 73 years, China is blindly supporting Pakistan on different ways. Even we have different religion, we have different culture, but even the Chinese and the Indian rivalry is not a secret, because some border issues are there,
Then again the turmoil in Afghanistan and even the pull out the forces of US forces from Afghanistan, and even the some border clashes between Pakistan and India, even India China. So the situation, the city situation is a little bit different as what we have now. And so this conference, I hope Sankari Sahib is also uh, will talk about these things. But this conference is unique in different sense because we are strategically we are discussing issues. We are not only saying that the CPEC is what we say that CPEC is the only thing, but we are also strategically we are some different position. Even the when we say political turmoil or maybe some other issues, Indian issues, even the China's issues, again the Russian geopolitical importance. Pakistan is important even today because the geopolitically we are at the base place. We have also Gwadar, we have also the different resources, physical resources, natural resources, and that's why even we are the first country we have also Pakistan has a nuclear power. So maybe some issues like this to combat nuclear proliferation, maybe some others. So this area will be some different players and stakeholders. They are also seeing this area in different eyes because the USA, we say that not say, but the USA also supporter of India, maybe because of self-nationalist taste to combat China. And again, we as a Pakistan as a nation is also we are in turmoil situation, economic situation. We should speak that the due to whatever the factors are there, but we are economic indicators and social indicators. Pakistan are not good. So when we are not good social indicators or economic indicators, then again we need to rely on China because China is the old partner and we have the self-interest. But the Chinese are supporting on through CPEC because CPEC was the first project in Pakistan which we see since last 7 years, 8 years that it will make breakthrough, economic breakthrough, or maybe the social development in Pakistan through different physical infrastructure. Because we have also energy crisis in Pakistan, so China is also a good experience in technology. So we can with the help of China, we can have the energy crisis control the crisis. Again, no need to say that we have also some threats from our border side, from Indian side, because the India, whatever we say, but India is directly or indirectly is controlling. Once India wishes to control the Pakistani, so border issues are also there. Even nowadays in Afghanistan, border issues are there after the US pull out, even though we have combated terrorism in Pakistan, because it was 7 years ago or 9 years ago, there was daily cases of bomb blasts in Pakistan. But we have somehow we have controlled terrorism. But again because we have to see the borders, especially the borders with Afghanistan. So no need to say that Pakistan is also important player in South Asia. Because no one can sideline the Pakistan. Yeah, no one can come without the support of Pakistan and play any important role in South Asia. Maybe either it was in Russia, USA, or in Chinese, because they need our support. At least it is clear that we are geostrategically we are at important positions. So all the stake players of the region need Pakistani support. And also we have also just like we have climate issues, even we have also environmental issues, social development, low social development indicators. So we need by this a breakthrough that maybe. So we are mostly I think we should
welcome China that he at least it is supporting Pakistani in different ways. So in the end, I am also once again I am thankful to all of the students, our guests coming from the far-flung areas. Even because last time also last night the Hassan Iqbal was very much interested to come here, because as the turmoil is in political turmoil in maybe in capital city or Lahore, so some meetings are there, reschedules are there. So last time, around the 11:30, he said that I am very much busy, and please accept my excuse, because we were he's our keynote speaker, and he has also said that he will join us online inshallah 12:25. So I also say thanks to Hassan Iqbal. Even he couldn't come in physically in conference, and I am also thankful because the Pakistani ambassador in China he is also online. So I also will welcome him to join us online, because he all these people have the rich experience, because students or faculty or others, it means they can avail the full benefit of their speeches, because throughout their lives when there was different experiences to share. So I am very much thankful to all of the participants, all of the invited speakers, Chinese ambassador, even the Hassan Iqbal Sahab, even Sayyid Mushahid Hussain who will join 12:30. Even Minister of the University, because he was also just told that he is trying to come back, but there's urgency meeting, because situation we can understand the political situation. So I am thankful to all of you, especially Saint Qazi Sahab, because without his participation it was almost impossible. Thanks to all. Kakepoto, Pakistan's ambassador to China, Ambassador Moinul Haq. Dear speakers, ladies and gentlemen, it's a matter of great pleasure and honor for the Center of International Strategic Studies Sindh to jointly organize today's conference with the University of Sindh, the oldest university of the country. Although I belong to the province of Sindh, this is the first opportunity for me to speak at this prestigious university. Before I present the concept note of the conference, let me express my profound gratitude to the Honorable Vice Chancellor of the University and his dedicated and able team, in particular Professor Dr. Hamdullah Kakepoto and his colleagues, for their fullest cooperation in organizing this conference on the strategic and economic dimensions of Pakistan-China relations amid deepening global geopolitical divide. Let me also convey our deep appreciation for the remarkable scholarly work being done by the Area Studies Center for Far East and South Asia of University of Sindh, particularly on Pakistan-China relations. As we all know, Pakistan and China established diplomatic relations in 1951. Pakistan was one of the first countries to recognize China and the first Muslim country to establish diplomatic relations with China. Over the last 71 years, the two countries have developed a relationship that is time-tested and is often described by the peoples and the leadership of the two countries as higher than mountains, deeper than oceans, and sweeter than honey. In 2015, during the visit of President Xi Jinping to Pakistan, both sides agreed that Pakistan-China relationship had acquired greater strategic significance against the backdrop of complex and changing international regional situations. Accordingly, the two sides agreed to elevate Pakistan-China relationship to all-weather strategic cooperative partnership. During his visit to China in November 2022, Prime Minister Shehbaz Sharif reaffirmed
Pakistan's commitment to further strengthen and deepen its strategic partnership with China and enhance practical cooperation in all areas. According to him, Pakistan China friendship is deep rooted and eternal. This friendship is rooted in the hearts of people of the two countries. We will implement China Pakistan economic corridor with Pakistan speed and take it forward to new heights. According to President Xi Jinping, friendship between China and Pakistan is based on trust and mutual support. Both countries have been devoted friends through good and bad times. Our friendship is pace setter for amicable relations between countries. We should therefore strengthen mutual assistance and deepen strategic cooperation, advance our shared interests and achieve common development, enhance close exchanges to build lasting friendships, and we should stick together in the face of difficulties and jointly meet security challenges. Relationship with China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. Pakistan and China support each other on core issues of national interest. Pakistan is committed to One China policy and supports China on issues of Taiwan, South China Sea, Hong Kong, Xinjiang, and Tibet. China supports Pakistan's sovereignty, territorial integrity, security, socio-economic development, and prosperity. The Chinese side considers Kashmir issue as a dispute left from history that should be properly and peacefully resolved based on UN Charter, relevant UN Security Council resolutions, and bilateral arrangements. Pakistan is committed to high quality development of the Belt and Road Initiative. The significance of the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship project under BRI for Pakistan's economic and social development, is difficult to describe in words. Both sides recognize Gwadar Port as the leading project of CPEC and an important node in cross-regional connectivity. Both sides wish to accelerate cooperation in areas of agriculture, mining, IT, and socio-economic development under CPEC and launched health, industry, digital, and green corridors earlier this year. The two sides attach great importance to people and cultural exchanges between the two countries and are endeavoring to build Pakistan-China relations as a model of friendly exchanges and cooperation among countries of different civilizations. The two sides believe that cooperation between China and Pakistan is conducive to maintaining peace and stability and promoting common development and prosperity in the region. Both sides condemn terrorism in all its forms and manifestations and are opposed to politicization of the issue of counter-terrorism. Pakistan and China enjoy close cooperation in the field of defense and peaceful uses of nuclear and space technologies. Both sides closely cooperate in the frameworks of the United Nations and Shanghai Cooperation Organization. Pakistan-China friendship has acquired added significance in the wake of the following developments. Number one, revocation of illegally occupied Jammu and Kashmir's special status, splitting it into Ladakh and Jammu and Kashmir and incorporating them as union territories by India on 5 August 2019. Number two, big power contestation that we are witnessing nowadays. Transition from a unipolar to a multipolar world that is visible nowadays. Number four, Quad. Number five, introduction of destabilizing weapon systems and technologies
by India in South Asia, and lastly, assignment of the role of net security provider to India as part of the US Indo-Pacific, so-called Indo-Pacific strategy. I am sure that the speakers at this conference would further expand on the strategic and economic dimensions of Pakistan-China relations amid deepening global geopolitical divide. Thank you very much. For Pakistan and its people. And of course, in Pakistan, China is known as a best friend. There is a famous Chinese saying which says that as distance tests stamina of a horse, so time reveals the sincerity of a friend. Seen from this perspective, of course, the seed of the bilateral relationship, which was sown 71 years ago, has now today blossomed into an evergreen tree with deep roots and strong branches. Dear friends, the spectrum of China-Pakistan relationship is very deep and wide. We have close cooperation in diverse areas ranging from political, economic, defense, security to culture, education and tourism and environment. In the next few minutes, if you allow me, I would like to present some key elements of our broad and diverse relation with China. Firstly, of course, the political dimension. In the joint statement which was issued during the recent visit of Prime Minister Shehbaz Sharif to China, to Beijing, we underscore that relation with China is the cornerstone of our Pakistan foreign policy, and expect also highlighted by Ambassador Ghazi in his remarks also. And similarly, the Chinese side also reiterated the successive generation of the political leadership in our countries have nurtured this relationship over the years and transforming into an all-weather strategic cooperative partnership. Actually, this was done, this elevation, this transformation come during the visit of President Xi Jinping to Pakistan in 2015, when I happened to be the chief of protocol and be honored to organize this trip. This relationship enjoys also support across political divide in both countries. And Pakistan, political parties may not agree on many things, but there is a complete consensus on our friendship with China. Second important dimension is of defense and security. Since many years, China has been our major defense partner, a key source of essential weapon systems. This defense cooperation, of course, not only is related to acquisition of important defense similar views important regional and international security issues. Jointly use JF-17 Thunder aircraft, which is a prime example of our defense cooperation. And now, after the initial phase of production in China, in Pakistan, in Canada, we are alhamdulillah producing the next generation of this very important aircraft, which remains a very important part of our ethos. Another important key defense collaboration is with Mini, between our two navies. Because frigate, we have building recently 2 frigates were launched from Shanghai, brand new frigates, and also we are building new submarines for Pakistan Navy. It is at this time, I think, important to note also, and they have seen that this defense coalition target other region
much in detail about CPAC, but I would like to mention one thing, that in Pakistan, we should realize the importance of CPAC. And region also. During Prime Minister visit, there was a lengthy discussion on CPAC, a strong commitment for the Chinese leadership as well to maintain the momentum of CPAC. Chief Minister of Sindh, Murasa, was part of the delegation, and one important project, KCR Karachi Circular Railway, was extensively discussed, and Chinese side have agreed to invest in this project, and we hope to see some. Moving forward, of course, CPEC would be focusing on industrialization, agricultural modernization, and IT. And for this, we have launched 4 new corridors: China-Pakistan Industrial Corridor, Digital Corridor, Green Corridor, and Health Corridor. One other important aspect which I would like to share here is that President Xi Jinping last year announced another initiative which is called Global Development Initiative, which is more or less aligned with the UN SDGs. Pakistan this year became the first partner country of GDI, and we signed an agreement during the Prime Minister visit, which means that there will be more investments into areas of health, education, and environment and climate change. So this is a very important aspect that for BRI, Pakistan had a flagship project of CPAC, and for GDI, Pakistan has become the first priority partner country of China. What I would like to just flag here, a very important aspect of Pakistan-China cooperation, which is financial and banking cooperation. As you would many know, that currently Pakistan is going through a difficult economic situation, financial crunch on our foreign exchange reserve, but China remains a very key partner in supporting and providing essential support for our budgetary support and financial support. Fifth aspect, of course, the people of Karachi and the people of Sindh knows is our civil nuclear cooperation. It is a very important, critical aspect of our strategic cooperation. The 4 Chashma projects, C1, C2, C3, 4 in Chashma, and now K2 and K3 coming online. We have a total capacity of over 3,000 megawatt of clean nuclear energy for our country, and the aim is to double this capacity in the short to medium term in the next year. Next is our education cooperation. Quickly, I would like to mention that China is now the largest destination for Pakistani students. There are over 25,000 students in the various disciplines in various universities in Pakistan. And we have now a CPAC consortium of universities in which over 140 universities are now participating, a very important platform of academic exchanges. And I don't know whether University of Sindh is part of that consortium, but we would be very happy to connect University of Sindh with Chinese counterparts in the coming days as part of this consortium as well. We have Pakistan chair in Peking University, and we have a number of Pakistan study centers, and as well as CPAC research centers in many Chinese universities. Culture and tourism has a very important part in our bilateral agenda. And since I have come here in 2 years ago, we have made an extra emphasis on this cooperation and people-to-people exchanges. We carry this cooperation under the framework of our cultural exchange program, which dates back to 60, but recently this year was extended to next 5 years. In 2021, we celebrated our 70 years of diplomatic ties, and more than 140 events were organized in 1 year by the 2 countries. The majority of those events were related to cultural events like Women's Forum, Literary Forum, film festivals, fashion shows, and of course, translation of Iqbal and Faiz famous poetry into Chinese. Tourism has also became an important part of our
sessions and website in Chinese language, which we have launched. And next year, get Kashmir, especially in affecting due Chinese are out of the grey list. And now China is of course supporting Pakistan on important issues of disarmament at NSG and at Geneva. Pakistan also extends very critical support to Chinese interests, especially human rights council in Geneva. So distress and natural disasters is also a hallmark of Pakistan-China ties during COVID-19 pandemic. As you all know, that it was due to Chinese vaccines. More than 160 million doses were provided by China, which were the mainstay of our inoculation drive. And now recently, during the floods, Pakistan, China was on the top of the list. They have provided close to 1 billion RMB assistance package for Pakistan and also for reconstruction. And they have announced that they will be providing more to Pakistan's rehabilitation and reconstruction efforts. So truly, I would like to conclude here saying that this is a relationship which is a historic reality and a conscious choice of our two governments and people. And it needs to be strengthened, preserved for our future generations. So I am very confident that role please go relation. I think the role of universities, research institutions, and think tanks, academia also look forward to the CISSS and the CISSS to provide guidance to us and further strengthen this very important and critical relationship with China. And I thank you all for giving me this opportunity to share my thoughts. The full good wishes for complete success of this. Thank you. Pakistan and India in different wars in the past as well. Look, we have a very close discussion and dialogue with China on a number of regional issues and also relating to India. China also has a troubled past with India, as you already mentioned about the 1960s war between the two countries. And recently also in 2000, as you know, there was another serious border clash between the two countries. And of course, this has been an issue between the two countries, this border clashes. Recently, a week ago, there was another clash, and I was just reading a report that China has moved its forces towards the Indian border, and there is a hue and cry in India as well that another war is imminent. China is mindful of its very, I would say, troubled neighborhood, being used by the Western countries to counter China, to encircle China. US has also put a very strong squeeze around China with its Indo-Pacific
strategy, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, these all are being used against China's rise here. So China remains very sensitive to its relationship in the neighborhood and its relationship with India as well. While it has a troubled past, while it understands that India is being used by the West, at the same time, China wants to remain or to keep a balanced relationship with India also, considering its influence, regional and global influence. They have made a very conscious decision to mend their ties with India, despite their border clashes. Their view is, China views is that we can have border problems, we can have territorial disputes, we remain a part of a bilateral agenda. Hello? We can hear you. Go ahead, please. So they say that they should remain a part of the bilateral agenda and it should not mar the overall bilateral relationship. India, on the other hand, looks at their border issues as a very critical part of the bilateral agenda, as have not moved to mend bilateral relationship. So it is, when we talk to the Chinese, this is a message that we get from them about their own relationship with India. And it's a message to Pakistan as well, that you have a problem with India also, a very serious problem on Kashmir, on which the Chinese supports us in principle. At the same time, they have a message that you need to mend your ties with it. When it comes to sovereignty of Pakistan, when it comes to defense of Pakistan, which country has helped us more than China? As I mentioned earlier about our defense needs, our critical defense needs, in terms of our strategic assets also, I don't want to go into detail, they have been supported from China in a large extent. Today, our defense, whether it's armed forces, air force, or navy, it is all supported from China, a very critical support, which of course is to balance the conventional balance and as well as strategic balance in the region. We continue to provide that political and critical defense support to Pakistan to ward off the challenge that we have in our region. Thank you. Next question. Anyone? Please. Assalamu alaikum. I am Dr. Ali Khan Gumru. Oh, thank you. I am Dr. Ali Khan Gumru. I have done PhD from Malaysia. So, particularly my interest is in security studies. So, I am asking for two things from Ambassador Moin. First, Pakistan signed an agreement with Turkey to build frigates. And a similar agreement was signed with China, as you mentioned in your speech, that China and Pakistan are building frigates and submarines. Actually, what Pakistan is looking today, not the security assurances or weapons from its friendly countries. Pakistan needs to have self-reliance in security area. So, as per my observation, Pakistan's agreement with Turkey is based on Pakistan will build one frigate in Turkey and one frigate will be built in Karachi shipyard. And Pakistani engineers will be observing their work and they will be getting technical expertise. Is there similar agreement with China that China is building frigates and submarines and Pakistani engineers will be allowed to observe the whole process and will repeat the same process in Karachi shipyard by building
same frigates and submarines in Karachi that can enable Pakistan to be self-reliant in the security area. That is my question. Either the agreement with China is similar the agreement with Turkey. Thank you. Sir, Kazi, can you kindly because the voice was not very clear. What is the exact question? What agreement with China? The gentleman is asking. I can't hear it. Yes, sir. As you mentioned in your speech that Pakistan has signed recently an agreement with China to build frigates as well as submarines. Pakistan already have another agreement with Turkey where one frigate was built in Turkey. Pakistani engineers participated there. They not only allowed them to go through the whole process, but they gave them technical expertise to build the similar frigate in Karachi shipyard. The agreement, my question is whether the agreement with China has the same typical possibilities that Pakistani engineers will be allowed to experience the whole process, acquire technical expertise, and repeat the same process in Karachi shipyard by building its own frigates and submarines in Karachi shipyard. Yes, because Pakistan is not looking for assurances, security assurances, or Pakistan is not looking for the weapons from US or China. Pakistan today is looking for self-reliance and self-assurances, not weapons from friends. That's my point. Please. Yes, thank you so much. Now I understand. And you're right, of course, Pakistan always looking for self-reliance and technology transfers when it comes to defense collaboration with any country. And China has been a very close partner in that respect. The frigates building that I mentioned to you, of course, there is a large team of Pakistan naval officials, engineers, and workers who are working on this project in Shanghai. And that means their capacity is being built, and they are going to take when they take these ships back to Pakistan, the entire Pakistan crew take it back. They get their training, and then these important machines would be maintained in Pakistan, for which we are building a brand new maintenance facility also. Like I mentioned to you about JF-17 Thunder aircraft. Of course, the first batch was built in China, but the next batches and the next generation of aircraft were all being built in Pakistan by Pakistan Air Force, their engineers and their workers. So we have built, this is part of the agreement between the two countries, that we not only collaborate on joint production, but training, expertise, transfer of technologies also. And China is one of the most reliable friends in this respect. We have time for one more question as Minister Asadi Pal will be joining us at 12:30 online, of course. Ambassador Moin, there is a question that we have received online, and it is as follows. The US sees BRI as a threat to its national interest. So how do you think it would impact CPEC? Yes, Ambassador Kazi, we are aware of the detractors of BRI and CPEC as well. We know that US, Western countries, and including India, have raised objection about CPEC. But despite the fact this cooperation between our two countries has moved forward with speed and with efficiency. And we have seen that China-Pakistan economic corridor projects have helped transform Pakistan socio-economic development. Yes, there has been attacks on CPEC projects. Recently, we've seen terrorist incidents in Balochistan,
Kasu attack was a very terrible attack, a very unfortunate incident. So there are detractors and adversaries of China-Pakistan friendship and CPAC which are there. We are mindful. Our two countries are mindful of that. In fact, Pakistan has raised two army divisions, especially to protect CPAC projects, which is unprecedented. And besides that, there are a large number of LEAs who are protecting not Kazi Saab, and it's really a pleasure and nice thing to be here in a university. Thank you very much, sir. It's really nice and a pleasure to be in a university where you have a mix of some very senior people and also you have some students sitting in the class. In my career, I have had many opportunities of talking to different audience, but coming to a university and talking to people who are very young and very energetic, and you can see brightness in their eyes, altogether different experience. I will try to cover this. A lot of things have already been said about the Pakistan-China cooperation, collaboration, friendship, and mutual assistance. While focus only on the nuclear technology, and we'll try to see this China friendship through the lenses of nuclear energy, as a matter of fact. And this is the topic of my talk today, and already Ambassador in his speech here, in his talk here, said that cooperation in civil nuclear is one of the most important things that is taking place between China and Pakistan. And I'll try to walk you through what has happened in the nuclear energy sector of Pakistan and how China's assistance and China's cooperation has helped Pakistan to build nuclear power plants and appear on the map of nuclear world as a country which can maintain, run and operate nuclear energy and nuclear power plants. So our first slide change करेगा ना कोई बंदा? करें? Next. So our first slide here is all, but I already said that actually whenever we talk of nuclear technology, and I don't mind taking just 2 minutes to say that when we talk of nuclear technology actually comprises three things. Number one is nuclear radiations, the radiations which come out of the nuclei. These radiations, as you might have seen in the nuclear medical centers and elsewhere talked about, these have very strong penetrating power, more penetrating than the X-rays. And they also have this capability to change the DNA of a cell if they strike it, which means we can use these radiations for seeing into things which we otherwise cannot, and we can also use them for destroying the tumors or anything else that we want to destroy. But this also means that it can also affect the healthy cells, and for that there are certain precautionary measures that we have to take, but that is another entirely different subject. And another part of nuclear technology is nuclear fusion, which is taking place at the sun. We know that all the time. In all the stars, it's the nuclear fusion that is generating energy. On Earth, it has only been possible to demonstrate this thing in the laboratory. Only recently you might have read कि लॉरेंस लिवरमोर में उन्होंने एक कर लिया है कि हाँ ठीक है हम फ्यूजन से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट वी आर अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम यूजिंग फ्यूजन एनर्जी इन द कमर्शियल सेक्टर, कि हम कमर्शियल सेक्टर पे फ्यूजन पावर प्लांट लगाएं और उससे बिजली बनाएं. वी आर मैनी ईयर्स अवे फ्रॉम दैट. अभी तक सिर्फ उसको हमने लेबॉर्ट्री में प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल को डेमोस्ट्रेट किया. द रियल न्यूक्लियर एनर्जी दैट वी टॉक अबाउट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन. और जो अगली स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, नहीं नेक्स्ट स्लाइड, ये वाली, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्लीज़. अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन में ये होता है कि एक यूरेनियम का एटम है वो स्प्लिट हो जाता है. व्हेन दिस एटम स्प्लिट्स, तो दो न्यूट्रॉन, द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू लुक इन दिस स्क्रीन इज कि जब वो एटम स्प्लिट होता है ना यूरेनियम 235 का, उसमें से दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और उसके साथ एनर्जी जनरेट होती है. इफ़ आई कैन यूज़ वन ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स टू कॉज अनदर फ्यूजन, तो मुझे एक लगातार सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मिल जाएगा, वो फ्यूजन होती रहेगी और मुझे उससे एनर्जी मिलती रहेगी. दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ बिल्ट. बाकी सारी चीज़ें जो हैं
वो इसकी इंजीनियरिंग डिटेल हैं। जैसे आप अगली स्लाइड में आप देखें कि ये एक पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में अंदर एक तरफ से जो लाल वाला इलाका है, यहाँ पे पॉइंटर तो मेरे पास नहीं है, कैन जो है वो पॉइंटर, खैर वो जा भी नहीं सकता यहाँ तक, नेवर माइंड। तो ये जो लाल वाला इलाका है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, पानी आगे जाता है, फिर बॉयलर में जाता है, उसके बाद जनरेटर में जाता है और बिजली बन जाती है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन टू दिस डिटेल, लेकिन द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ए कन्वेंशनल पावर प्लांट इज़ कि यहाँ पे जो हमने दिखाया है, ये बिजली की जो हीट निकल रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो न्यूक्लियर फिशन से जनरेट हो रही है। और एक कन्वेंशनल पावर प्लांट में, अगली स्लाइड चलें, नेक्स्ट एक बटन, तो एक बटन वापस जाएं, वापस फिर आगे एक बटन, तो एक वक्त में एक बटन दबाओ ना यार। हाँ, अब दबाएं एक बटन, यस, ओके, दिस इज। तो ये जो है यहाँ पे वो जो हीट जो जनरेट हो रही है ना, अगर मैं न्यूक्लियर प्रोसेस की जगह उसको तेल से जनरेट कर लूँ, गैस से जनरेट कर लूँ, कोयले से जनरेट कर लूँ, तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट एंड आई स्टिल गेट द सेम काइंड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, और अब नाउ वी कैन कम टू दी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पाकिस्तान ने जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो सिंध में आपके यहाँ से करीब समंदर के किनारे पे लगा था कराची में, वो 137 मेगावाट का था, वो हमें कनाडा ने दिया था। एंड पाकिस्तान वाज द 15th कंट्री इन द वर्ल्ड जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसने लगाया। और अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड पे जो दो कॉलम है ना, उसमें सारे गोरे मुल्कों के और एडवांस कंट्रीज़ के नाम है, और सिर्फ इंडिया का एक नाम है जो हमसे पहले है, और बाकी सारे मुल्क जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बाद बनाया। तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन डूइंग दिस। तो कनाडा से हमने बात की, उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट दे दिया और लगा दिया और चला दिया। और चूँकि आप लोग में से मोस्टली IR के और सिक्योरिटी स्टडीज़ के और स्ट्रेटजिक स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि सुबह 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, विच वॉज कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो एट दैट टाइम द कैनेडियंस केम टू पाकिस्तान, उन्होंने उनसे कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू फ्यूल फॉर दिस रिएक्टर, वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड द स्पेयर पार्ट्स फॉर द रिएक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजी फॉर दिस रिएक्टर, तो आप ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसके ऊपर साइन करते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्या मतलब है कि यू कैन नॉट यूज़ दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पजेस। तो पाकिस्तान रिफ्यूज़ टू साइन। और आपको पता होगा कौन से 3 मुल्क हैं जिन्होंने नहीं साइन किया। स्टूडेंट्स में से पीछे कोई बता सकता है कौन से 3 मुल्क हैं जिन्होंने NPT पे साइन नहीं किया? पाकिस्तान, इंडिया और नहीं, पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल। पाकिस्तान और इंडिया और इसराइल ने NPT पे साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, लेकिन उसके बाद उससे दे वॉकड आउट ऑफ इट। और आपको पता है ईरान के ऊपर जो आजकल सारा मामला चल रहा है कि ईरान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ईरान ने साइन किया हुआ NPT, लेकिन पाकिस्तान ने साइन नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई लीगल मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम उसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो हमारे इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होते, वो सारे के सारे आइए सेफ गार्ड्स में। बट एनी इवेंट कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर हमने इन प्लांट्स को खुद चलाया। अगली स्लाइड पे आइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो प्लांट के जो कैपेसिटी फैक्टर था इसका वो बहुत ही कम था। व्हाट इज़ दैट नंबर देयर? 32%, एंड दैट वाज बिकॉज वी डिड नॉट हैव द फ्यूल फॉर इट। कनाडा तो हमें फ्यूल दे नहीं रहा था। तो ये एक सेल्फ इंडिजनाइजेशन का, सेल्फ रिलायंस का प्रोग्राम शुरू हुआ, एंड पाकिस्तान अल्टीमेटली ऑपरेटेड दिस पावर प्लांट बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी फॉरेन असिस्टेंस। तो ये इसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ, एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि ये बेसिकली, थैंक यू, अच्छा ये बेसिकली देखें कि कैनोप का हमने बता ही दिया। तो इससे 2 फ़ायदे हुए, बिकॉज द कैनेडियंस जो ने हमने जो एनर्जी का जो कहा कि हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट तो ये हुआ कि जैसे हमने कहा कि हमने खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़ने की कोशिश की। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट हुआ ये कि फिर जब कैनोप के बाद पाकिस्तान ट्राई टू बिल्ड अनदर पावर प्लांट, जैसे एम्बेसडर ने बताया था कि चश्मा में हमने लगाए, दे आर 300 मेगावाट पावर प्लांट, बट पाकिस्तान वांटेड टू बिल्ड 900 मेगावाट पावर प्लांट, और फ्रांस उस ज़माने में बना रहा था। और हमने जब टेंडर्स किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि मैं आपके यहाँ आके बनाएंगे बिकॉज ऑफ दिस NPT थिंग्स। तो बाहर फिर हमारा प्रोग्राम भी डिले हो गया, और फॉर दैट मैटर कैनोप जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे हमने कहा, वो भी बहुत सुपर नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो सारा टाइम चलता रहा। उसके बाद फिर एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अगली स्लाइड का ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बेटा, और आगे चले जाओ। नेक्स्ट का मतलब एक बटन दबाई दो,
अच्छा नहीं सॉरी, आप सही कह रहे हैं, वापस जाएं, यू आर राइट, ये चश्मा आ गया, फिर चलें वापस, सॉरी यू आर राइट, वो एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि फिर हमारा एक चाइना ने के साथ 1986 में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी देंगे, फ्यूल भी देंगे एंड ऑल दोस थिंग। उसके बाद फिर अगली स्लाइड पे अब ठीक है आपसे, तो फिर जब पहला रिएक्टर लगा चाइनीज़ असिस्टेंस के साथ, तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो चश्मा पे लगा 325 मेगावाट का ये पावर प्लांट था, और आप देख सकते हैं कि बाय द ईयर 2000 दिस प्लांट बिकेम ऑपरेशनल। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जब ये प्लांट लग गया और चल गया, अच्छा इन द फर्स्ट प्लेस हमने जब ये प्लांट लिया था ना चाइना से, C1 प्लांट, तो उस वक्त उसी तरह का एक प्लांट चाइना अपने यहाँ लगा चुका था, जिनशन 1 लगा रहा था, बल्कि फॉर दैट मैटर 1991 में वो प्लांट ऑपरेशनल हुआ, और उसी वक्त फिर उससे के साथ ही उससे पहले हमने कांटेक्ट कर लिया था, और फिर चाइना ने वो प्लांट हमारे यहाँ बनाना शुरू किया। चाइना का भी फर्स्ट पावर प्लांट था फॉर एक्सपोर्ट, और पाकिस्तान का भी पहला पावर प्लांट था इन कोऑपरेशन विद चाइना। कैनुप के साथ हमने कराची का प्लांट तो बनाया हुआ था, लेकिन वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी। ये जो चाइनीज़ प्लांट था ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड था, ये US बेस्ड टेक्नोलॉजी थी जो वेस्टिंग हाउस ने किसी ज़माने में 1970s में डेवलप की थी। अब जो है उसके बाद C1 के बाद C2, C3, C4 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे चश्मा में चल रहे हैं। और अगर कोई बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी कोई थोड़ी बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट में या सिविल न्यूक्लियर में गुजारी हो, तो ये उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र है कि 4 प्लांट्स एक साथ, इसका पॉलीगैमी से कोई ताल्लुक नहीं, कि 4 प्लांट जो हैं वो एक साथ आपके चल रहे हैं। कैन एनीवन फ्रॉम बिहाइंड बता सकता है कि 4 प्लांट एक साथ लगाने में क्या फ़ायदा होगा? Why do you want to put 4 plants at the same site? पीछे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई वैसे बोल दो यार, गलत सही कुछ भी। देखें इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आपकी बहुत सारी सर्विसेज कॉमन होंगी, आपके बहुत सारे जो ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है वो कॉमन होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ प्लांट में, चारों प्लांट में एक जैसी चीज़ें चल रही हैं, आपने एक सेटअप बना लिया, यू नो हाउ टू फिक्स दैट थिंग। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपके 4 AC हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं, एक पेशावर में, एक कराची में, उनको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर चारों एक ही कमरे में लगे हुए हैं, एक ही बिल्डिंग में लगे हुए हैं, तो इसको मेंटेनेंस और ऑपरेशन बहुत आसान है, एक ही चीज़ दूसरे में भी इस्तेमाल की जा सकती है ज़रूरत पड़ने पर। तो दैट इज़ द एडवांटेज। फिर ये कि जहाँ आप पावर प्लांट लगाते हैं उसके लिए आपको ग्रिड बिछानी पड़ती, लाइनें बिछानी पड़ती हैं, तो लाइनें भी वही सेम लाइन, उसको ज़रा बड़ा कर लें एंड यू कैन टेक द पावर अप। नेक्स्ट, अच्छा ये उनके प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, एज यू कैन सी, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वो बड़े हाई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दीज प्लांट्स जो दूसरे सेक्टर में। जैसे आपको पता ही ना आजकल क्या मसला है, लोड शेडिंग का मसला है आजकल, और या इतनी पावर हम जनरेट नहीं करते, हालांकि प्लांट लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब आप फ्यूल ख़रीदते हैं तो वो आपको इतना महंगा पड़ता है कि आप उसने बाकी फ्यूल की बिजली बेच नहीं सकते। और आज सुबह तो मैंने अखबार में पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि शायद 31 पैसा बिजली की जो है कॉस्ट हम बढ़ा देंगे ताकि हम सर्कुलर डेट से निकलें। तो इस टाइम पे बताने में गुहार नहीं कि अगली स्लाइड देखें कि सॉरी वो बाद में है कि न्यूक्लियर की जो कॉस्ट है एवरेज वो 12-13 पैसे है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली निकल के हम देते हैं दैट इज़ ओनली 12 to 13 पैसे। तो उसके बाद वी केम टू दिस K2 K3। चलें नेक्स्ट। अच्छा K2 और K3 में ये फ़र्क है कि वो 300 मेगावाट के प्लांट थे, ये 1100 मेगावाट का प्लांट है, वो जनरेशन 2 के प्लांट थे, ये जनरेशन 3 के प्लांट है, ये मॉडर्न प्लांट है। फॉर एग्जांपल इसकी जो कंटेनमेंट है वो 2 हैं, एक कंटेनमेंट अंदर है जिसके अंदर रिएक्टर है और उसके ऊपर फिर एक और कंटेनमेंट बनाई हुई है। चश्मा में जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक कंटेनमेंट है। और जो चेरनोबिल में एक्सीडेंट हुआ था जिसके आपने नाम सुना होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर बहुत बदनाम भी हुआ हुआ है दुनिया में कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है और रेडिएशन फैल जाती हैं, उसके ऊपर कोई कंटेनमेंट नहीं थी। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो सारी रेडिएशन बाहर आ गई। बट एट कैनुप वी हैव 2 कंटेनमेंट्स, एक और उसके बाद दूसरी। उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल डिज़ाइन को या सेफ्टी को बेहतर करने की चीज़ें हैं। ये प्लांट मिला के सारे अगर हम देखें तो ये जो हमारे 6 प्लांट हैं, दिस इज़ द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ दीज प्लांट्स। अगर आप ये नीली वाली लाइन देखें ना,
ये है कि हाउ वेल दीज प्लांट्स आर परफॉर्मिंग। और अगर कोई प्लांट आप लगाएं, कैपेसिटी फैक्टर आप समझते हैं, कैपेसिटी फैक्टर ये होता है कि टोटल एनर्जी में 1 साल से इसमें कितनी बना सकता था और मैंने एक्चुअली बनाई कितनी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर 100% है, तो इसका मतलब है कि वो प्लांट सारा साल चलता रहा विदाउट फेल। और अगर किसी प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर 50% है, तो इसका मतलब ये है कि या तो 50% पे सारा साल चलता रहा, या फुल पावर पे 6 महीने चला, या मुख्तलिफ पावर पे चला, लेकिन उसने पूरी बिजली नहीं बनाई। और जितने भी ये पावर प्लांट हैं हमारे, इनको फ्यूलिंग के लिए 1 महीने के लिए साल में बंद करना पड़ता है। तो इसलिए 100% कैपेसिटी फैक्टर लाना ओवर दैट वो इसमें पॉसिबल नहीं है। इफ़ यूर 80+, तो आप बहुत अच्छे हैं, मतलब उससे आपको बहुत परफॉर्मेंस का अच्छा हुआ है। और ये कीमतें हैं तकरीबन न्यूक्लियर वर्सेस अदर्स दूसरी, जैसे मैंने अभी कहा कि न्यूक्लियर की कीमत जो है ना वो ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट। तो इसके बाद जो हमारा अगला वो ये है कि हम आगे किस में चलें। कि अब समटाइम्स पीपल डू आस्क के जी जो आपके पावर प्लांट्स हैं इसके फ्यूल सप्लाई कहाँ से हैं। सिंस वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन चाइनाज कोऑपरेशन, पहली बात तो ये है कि हमें जब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं देना था, चाइना एग्रीड टू गिव द न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड एंड बेटर कि आप किसी ऐसे मुल्क से न्यूक्लियर पावर प्लांट लें, ख़रीदें जिसके साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस में, फ्यूल में आपको वो प्रॉब्लम ना हो जो हमें कैनुक में पेश आया व्हेन वी डेल्ट विद कनाडा। तो चाइना नॉट ओनली गिव्स अस दिस पावर प्लांट, हमने उनके साथ मिलकर लगा लिए। तकरीबन 70% कॉस्ट हम उनको देते हैं, 30% हमारे खर्च होते हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डू। और उसके बाद फ्यूल जो है वो चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि लाइफ टाइम जब तक ये रिएक्टर चलेगा, जब तक न्यूक्लियर पावर प्लांट चलेगा, वो हमें उसका फ्यूल जो है वो देते रहेंगे। और ऑफ कोर्स एक इंडिजनाइजेशन भी है, जैसे भी किसी ने पूछा भी था। तो कॉन्ट्रैक्ट तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का टर्न की हम देते हैं चाइना को, और मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया में टर्न की ही दिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। लेकिन इंडिजनाइजेशन के लिए आप बाई बैक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि ये काम जो है ना मैं करूँगा, इसके पैसे तुम मुझे वापस कर देना, या इसके पैसे तुम मुझे दे देना। तो हैविंग डन दैट, अब जो नेक्स्ट है आगे चलें। और ये मैं इंडिजनाइजेशन के लिए जो हमारा एक सेटअप है जहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट जी। अच्छा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इसमें वो है कि नेक्स्ट हमारा प्लांट होगा C5, जो कि नाम तो उसका C5 है, और वो लगेगा चश्मा में, लेकिन वो 1100 मेगावाट का ही प्लांट होगा। आगे चलिए। तो ये एक नक्शा है विच वी कीप विद अस, जैसे मैं एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया था। ये वो प्लांट हैं जो लग चुके हैं, और ये वो प्लांट हैं जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि लगेंगे। एंड वी आर होपिंग दैट बाय 2050 हमारा 40,000 मेगावाट न्यूक्लियर के पाकिस्तान में लगेंगे। देखने को तो 40,000 मेगावाट बहुत लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो थोड़ी बहुत भी, अगली स्लाइड आइए। ये तो खैर उसका मैथमेटिकल टैबुलर प्रेजेंटेशन है जो भी हमने दिखाया। आगे तो न्यूक्लियर पावर जो है ये, इसको हमने कह दिया कि न्यूक्लियर पावर एक बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन है। बेस लोड का मतलब ये होता है कि ये हर वक्त आपको बिजली प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट के लिए कोई चेंज नहीं है, कोई थ्रेट नहीं क्लाइमेट के लिए। और न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो भी इस तरह नहीं जैसे आजकल यूरोप को मुसीबत पड़ी हुई है, या पाकिस्तान को भी, कि आपको वो नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, RLNG मिल रही, तो एक दफ़ा फ्यूल ख़रीद लेते हैं तो आप प्लांट उसका चला के उससे बिजली बना सकते हैं। कैपिटल कॉस्ट उसकी हाई है, लेकिन उसके बावजूद वो कंपटीशन में आती है, और हमारा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो स्मॉल है। अगली स्लाइड पे चलें, तो उससे भी आगे आ जाएं। तो ये थोड़ा सा मैं जस्ट वांटेड टू शो टू यू पीपल, क्योंकि बहरहाल आप डायरेक्टली सारे साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं, बट climate change is a major concern these days, and climate change is happening because of the emission of greenhouse gases जो उसमें से emit होती हैं, which is mostly CO2। तो CO2 की emission न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत कम है, जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर क्लीन है, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता, उसमें से SO2 ये और इस तरह की चीज़ें नहीं निकलती, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है, स्टेबल भी है, बेस लोड भी है, और सस्ता भी है। आगे चलिए, नेक्स्ट। नहीं, और आगे चलो। अच्छा, जस्ट टू फिनिश दिस टॉक, ये रिलेशनशिप है, एज यू माइट हैव सीन,
कि एनर्जी प्रोडक्शन और आपकी जो जीडीपी है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। किसी मुल्क में अगर आपने देखना हो कि भाई डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, तो आप देखेंगे उसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। ये नहीं हो सकता कि एनर्जी तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, पावर प्लांट्स तो आपने लगाए नहीं और आप कहेंगे मैं बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री हूँ। दिस कैन नॉट हैपन। दीज टू थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कर्व। आगे, और ये एनर्जी सिक्योरिटी और सारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, दीज आर ऑल रिलेटेड। और नेक्स्ट स्लाइड, कि अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल और रिलायबल, ये तीन चीज़ें जो हैं वो किसी एनर्जी सोर्स में होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब ये है कि आप उसको अफोर्ड कर सकें, और दूसरी बात है कि एक्सेसिबल, आपको वो मिल सके, मिल जाए ज़रूरत पड़ने पे। जैसे अब यूरोप वाले इस वक्त हैं, दे कैन अफोर्ड द गैस बट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू दैम बिकॉज रशिया हैज़ रिफ्यूज्ड कि मैं आपको गैस नहीं दूंगा, ठीक है ना। और रिलायबल में फिर ये आ जाता है कि आप सारा साल उसको चला सकें। फॉर एग्जांपल हाइड्रो है, हाइड्रो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जब सर्दियाँ पड़ती हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो हमारे जो तरबेला और मंगला होते हैं वो तकरीबन 20% कैपेसिटी फैक्टर पे चलते हैं, मतलब बहुत ही कम बिजली वो बना सकते हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो इसलिए ये एक सारी चीज़ें मिल के आपको अल्टीमेटली एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। और लास्ट स्लाइड जो है वो हमारी सिर्फ ये है, आप में से आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये 17 गोल्स हैं जिसके बारे में 2030 तक मुख्तलिफ़ मुल्कों को जाके प्रेजेंट करना होगा या बताना होगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। और उन गोल्स के 17 गोल्स के 169 टारगेट्स हैं कि भाई आपको एक्चुअली क्या काम करना है। मसलन अगर आप कहें कि जी मैंने एजुकेशन सबको देनी है, इसमें है ना एजुकेशन का गोल है, तो उसमें आप बताएंगे कि जी मेरी लिटरेसी कितनी रेट है मुल्क के अंदर, कितने बच्चे मेरे अनपढ़ हैं, कितने बच्चे मेरे स्कूल से बाहर हैं। जैसे पाकिस्तान के मसला कहते हैं 25 मिलियन बच्चे तो स्कूल से बाहर ही हैं। तो इस नंबर को आपको बताना होगा एक्चुअली कि कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर का इन डेवलपमेंट गोल, आप क्लिक करेंगे, नहीं वापस, सिर्फ ऑल आई नीड टू शो के दो जो चीज़ें हैं ना, क्लाइमेट एक्शन, वापस आइएगा इसी स्लाइड पे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर इफेक्टेड अगर आप मुल्क में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यूरोप फेस कर रहा है, एनर्जी नहीं है, कोल्ड विंटर आने वाली है। अगर अमेरिका की फॉरेन, अगर आप उनके थिंक टैंक का एक जगह पढ़ा था, उसने कहा था कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इज़ इफेक्टेड बाय द फैक्ट कि हमें मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना है, और मिडल ईस्ट को हमें इसलिए कंट्रोल करना है कि उनके पास तेल है। तो एनर्जी इज़ समथिंग जिसको आप भूल नहीं सकते, जिसको आप अपने डायमेंशन से निकाल नहीं सकते। तो जब आप उसकी भी जिक्र करते हैं, देन यू आल्सो नीड क्लीन एनर्जी। जो न्यूक्लियस जो है, एज यू कैन चलाएँ आगे, टिक एक दो दफ़ा, ये टिक जो आते हैं, हाँ ठीक है। तो दो जो हमने इसके ऊपर खास तौर पर टिक रखे हैं न्यूक्लियर के, क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और आपके मौसम को बहुत ठीक करता है। तो चाइना के साथ, कमिंग बैक टू चाइना टू फिनिश ऑफ, चाइना ने अभी हमारे साथ उनका एक जैसे 1986 में जो एग्रीमेंट था उसके तहत वी आर टॉकिंग कि इंशाल्लाह जल्दी वी विल बी एबल टू स्टार्ट दिस C5 न्यूक्लियर पावर प्लांट एट चश्मा, और उसके बाद और मुल्क में डिफरेंट जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो थैंक यू वेरी मच। जितने कहें, नहीं मैं खड़ा होकर, मैंने आप बताया टीचर हूँ तो खड़े होकर लेक्चर देने में मज़ा आता है। Please, if there are any questions, go ahead. Yes, I have. Please. Please. What about Chernobyl disaster? Ssorry? Chernobyl disaster. चेरनोबिल डिज़ास्टर, नहीं आप वो तो मैंने आपको बताया ना कि जो चेरनोबिल में एक्सीडेंट हुआ था। सर आपने कहा कि ये इन्वायरमेंट के लिए सही है, तो फिर वहाँ पर आसपास के जो लोग थे उनको हाँ देखिए, पहली बात है कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये कि प्लांट ऑपरेट कर रहा है। अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और उसके पास आप बाहर खड़े हो जाएं दीवार के, तो आपको वो कुछ नहीं कहता। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक आपको पता है जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, तो यू आर बीइंग एक्सपोज टू न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो हम कहते हैं एक यूनिट है 3 मिलीसीवर्ट, आपको ये डोज मिल रही है इस वक्त 3 मिलीसीवर्ट की, हर हम में से हर एक कोई डोज मिल रही है। और दुनिया में बाद शहर ऐसे, आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा क्योंकि हर बंदे के दिल में सवाल आता ज़रूर है। तो दुनिया के कोई मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे ये एवरेज डोज इससे बहुत ज़्यादा है। इंडिया में केरला में है, ईरान में एक जगह है पता नहीं रामसर या वट एवर, ब्राज़ील में जगह है जहाँ पे डोज इससे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ भी लोग आराम से रहते हैं।
3 मिलीसीवर्ट या वट एवर। जब मैं हवाई जहाज़ में ट्रैवल करता हूँ फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद एंड बैक, तो जब मैं थोड़ा ऊपर होता हूँ तो मुझे थोड़ी डोज ज़्यादा मिलती है कि डोज ऊपर से आ रही है कॉस्मिक रेडिएशन से। तो वो जो मुझे एक्स्ट्रा डोज मिलती है ना इधर से इधर जाने में और वापस आने में, वो उतनी है जितनी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवार के बाहर 1 साल रहने में मिलेगी। विच मीन्स के नॉर्मल ऑपरेशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता, कोई डोज नहीं देता, ठीक है ना। आप उसके पास खड़े हों तो आपको कोई मसला नहीं है, हम उसके अंदर ही रहते रहे। मैंने बहुत साल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करते हुए गुजारे हैं। हाँ, ये ठीक है कि उसमें रेडिएशन होती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। आपको देखना होता है कि आप उस एरिया में ना जाएं, और जाएं तो आप प्रॉपरली शील्डेड हों। बट नथिंग कम्स आउट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एज फार एज द एनवायरमेंट कंसर्न। दूसरी बात जो आ सकती है, जो हुई है, वो एक्सीडेंट है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट। दुनिया में अभी तक 3 न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए, एक TMI में अमेरिका में, एक चेरनोबिल में रशिया में, और एक फुकुशिमा जापान में। इन तीनों में टोटल बंदे जो मरे हैं वो 30 हैं रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो उसकी कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। हाँ, रेडिएशन डोज से ज़रूर बाहर निकल के आई चेरनोबिल से, और वो डोज आई, लेकिन वो डोज जिस इलाकों में बाहर दूर दराज गई वहाँ वो कोई इफेक्ट नहीं उसने डाला, कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती, बिकॉज इज स्मॉल। जैसे इसकी मिसाल अगर आप लेना चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपको फ़र्ज़ करेंगे समवन हिट्स यू विद समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, तो कुछ नहीं होगा। अगर सुबह से शाम तक टक 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 करके हल्का हल्का लगा तो इतना फ़र्क नहीं है। अगर ज़ोर से एक ठक लगेगा, दैट विल मेक इट डिफरेंस। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इज स्मॉल, तो वो आपको हर्ट नहीं करती, वो हमें मिलती है। जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो फिर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बम्बार्ड करते हैं उसके ऊपर, दैट इज़ व्हाट किल्स द कैंसर। तो आम सेल को वो ख़राब नहीं कर सकती जो आम हमें रेडिएशन मिलती है। और चेरनोबिल में एक दूसरी बात ये भी थी कि उन्होंने बहुत सारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे ना उनको बाईपास करके काम कर रहे थे, देयरफॉर दिस थिंग ब्लू ऑफ और एक्सीडेंट हो गया। अब जो पावर प्लांट, जैसे हमने कहा कि कैनोप का जो प्लांट है वो जनरेशन 3 का है, तो मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि उस प्लांट में जिसमें एक्सीडेंट हुए, TMI, फुकुशिमा, चेरनोबिल, उसमें और इन प्लांट्स में इतना ही फ़र्क है इतना रोटरी टेलीफोन और सेल टेलीफोन में है, एज़ फार एज द डिज़ाइन इज़ कंसर्न, एज फार एज द ऑपरेटर ट्रेनिंग इज़ कंसर्न। तो अभी पीपल आर वेरी केयरफुल। बहुत सारे सीवियर एक्सीडेंट को मैनेज करने के उसमें सिस्टम भी लगाए हुए हैं, लेकिन अगर कोई रेडिएशन उसमें से निकलती भी है, जैसे 3 एक्सीडेंट में बताया, तो कोई डेथ्स उसमें नहीं हुई। और एक मामूली सा हवाई जहाज़ गिरता है तो इतनी हो जाती हैं। इंडिया में भोपाल में हुआ था वो उसका केमिकल का, अगर आप कंपेयर करें नंबर ऑफ डेथ्स इन हाइड्रो को, आपको पता है कितने बंदे कोल के धुएँ से या उसके जो पोल्यूशन से दुनिया में मरते हैं, उनका हिसाब है क्लोज टू 6 to 8 million persons per year premature deaths because of environmental pollution caused by coal power plants and other fossil fuel power plants. सर इससे तो तो और भी ज़्यादा है, लाइक जब USA में 1.7 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं तो मेडिकल एरर से। हाँ, 1.7 तो शायद नहीं मरते होंगे, लेकिन बहरहाल होता है ना ये। तो ये इसी तरह न्यूक्लियर का भी जो गड़बड़ है थोड़ी सी, कि जो न्यूक्लियर के लोग हैं ना, जब न्यूक्लियर शुरू हुआ दुनिया में, तो न्यूक्लियर के लोगों ने कहा कि जी इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। वो गलत था। कहना ये चाहिए कि एक्सीडेंट तो हो सकता है, बट वी कैन मैनेज इट एंड वी विल मैनेज इट। एंड देन एक्सपीरियंस ऑल्सो शोर कि उसमें ठीक है। अब फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ, इतनी मुसीबत, क्या किया उन्होंने जापान वालों ने कि 55 रिएक्टर तो उन्होंने सारे बंद कर दिए। तो ये ओवर रिएक्ट किया उन्होंने। अब उन्होंने चलाने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, उसमें से 10 उन्होंने चला लिए। लेकिन कितने बंदे मरे उस एक्सीडेंट्स में? जो 2-3 रिएक्टर उनके बर्न आउट हो गए थे, उनकी 2 आदमी सिर्फ, और वो रेडिएशन से नहीं मरे बल्कि उनको सुनामी उठा के बहा के ले गई थी। लेकिन उनके 1000 बंदे मरे बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। वाई? बिकॉज दे रीलोकेटेड पीपल। उसमें जो बेचारे बुढ़े टुडे, कोई किसी की मेडिकल केयर की गड़बड़ हो गई, किसी कोई और गड़बड़ हो गई, नई जगह गए, 1000 पर्सन डाइज बिकॉज ऑफ दैट। एंड लेटर ऑन उन्होंने जल्दी में जो फैसले किए, ये भी पता चला बाद में कि एक जगह लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए, बाद में पता चला कि वहाँ की रेडिएशन ज़्यादा है और वहाँ कम थी, बाद में थोड़ी सी चेंज होकर वो उधर आ गई। तो मतलब ये कि थोड़ा सा हमारा जो पब्लिक का रिस्पांस है, जो गवर्नमेंट्स का रिस्पांस है, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो बहुत उसके मामले में ऑफेंसिव है न्यूक्लियर के उसके अंदर। जी, और Yes, please. The lady over there, please. The lady at the end. Gender balance भी होना चाहिए. हाँ, और ज़रा या तो माइक लीजिए, ज़ोर से बोलिए जी।
अच्छा सवाल है आपका। यस, आई थिंक आपने अच्छा सवाल किया। एसओपीज़ नहीं, हम उनको कहते हैं एमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि अगर एमरजेंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो क्या प्रोसीजर्स होंगे जो आप उसके बाद इनिशिएट करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान में एक है जिसको हम कहते हैं पीएनआरए, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। और न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, वो चेयरमैन पीएसी को रिपोर्ट नहीं करती, पीएसी से बिल्कुल अलग एक ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमें लाइसेंस नहीं देते, वो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्रिटिकल नहीं करने देते और वो चलाने नहीं देते जब तक कि हम डेमोन्स्ट्रेट ना करें कि वो सारे जो इमरजेंसी के प्रोसीजर्स हैं जो उन कंट्रीज़ में जिनका आप कह रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा, वो हम रखे हुए हैं और हमने उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस भी लेते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो कैसे उस एक्सीडेंट को हम हैंडल करेंगे। तो नॉट ओनली उसमें फिर ये भी इन्वॉल्व होता है, फिर उसके अंदर हमने एक उसके ऊपर भी एक बॉडी बना रखी है जिसमें फिर वो अल्टीमेटली बहुत से दूसरे लोग जो सिविल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के, वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। तो सारे प्रोसीजर डिफाइंड हैं एंड दीज हैव टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द रेगुलेटर बिफोर यू आर अलाउड टू ऑपरेट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इतना सिस्टम हमारा इस मामले में आई थिंक। और जो हमारी जो कंडीशंस हैं दी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी IAEA डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, उससे डिराइव करके रेगुलेशंस बनाई गई हैं एंड दीज रेगुलेशंस मस्ट बी फॉलो एंड आर फॉलो। ट्वेंटी मिलियन 200 तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। इट्स ओके 20 करोड़ 2 करोड़, ठीक है ठीक है। देखें, मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन देखें बात ये हो रही है एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट जब शुरू हुआ तो उससे कुछ अर्सा पहले एटम बम का धमाका वो हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने किया था। एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कॉमन मैन कि अपने आप को वो डिसएसोसिएट कर लेता कि जो चीज़ इतनी डिस्ट्रक्टिव है वो मेरे घर के पास मेरे बैकयार्ड में क्यों लग रही है जिसमें से ये कुछ निकल रहा है। तो इन द फर्स्ट प्लेस आई जस्ट वांट टू से कि जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है बनता है, देयर इज़ नो वे कि इट कैन एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब। कोई फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है तरीका कि वो इस तरह से, उसका दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है एंड वी नो दैट क्योंकि हमने दोनों काम किए। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये होती है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कोई मसला नहीं है। तीसरा ये है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो बात ये कि न्यूक्लियर के लिए आम तौर पे पब्लिक में एक थोड़ा सा सेंटिमेंट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो रेडिएशंस को देख ही नहीं सकते। जैसे मैंने अब आपको बताया कि जी आप रेडिएशंस के एक्सपोज हैं, आप तो नहीं देख सकते ना उन रेडिएशंस को, हाँ डिटेक्टर अगर होंगे तो उनसे आप उसको देख सकेंगे। तो एक काम जो करना चाहिए था न्यूक्लियर इंडस्ट्री को कि लोगों को इस पर एजुकेट करते बताते कि भाई ये रेडिएशन हैं। जैसे मैं घर में अपने थर्मामीटर वाला लगा सकता हूँ कि जी टेम्परेचर कितना है, तो मैं एक रेडिएशन का डिटेक्टर भी लगा देता, मुझे पता चल जाता, ठीक है। लेकिन ये सब काम नहीं हुआ तो लोग जो है ना इससे डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। वैसे जर्मनी ने कहा कि जी मैं अपने पावर प्लांट सारे बंद कर दूंगा। अब उसके बाद फिर जब उन्होंने फुकुशिमा के बाद फैसला कर लिया था कि 2022 में सारे बंद कर देंगे, अब वो जो हैं 3 जो अब रह गए थे उन्होंने कहा नहीं अभी इनको चलाएं क्योंकि बिजली उनको नहीं मिल रही। एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि हमने वो दूसरे प्लांट भी क्यों बंद कर दिए। तो न्यूक्लियर के कुछ फ़ायदे भी हैं और उसका ये एक इम्पैक्ट जो लोगों में बना हुआ है ना वो थोड़ा सा ओवर साइज है। अब दूसरे और वो दिस आई ऑलवेज से जब मेरा मौका मिलता है कभी IMMB और इधर उधर भी, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री ने अपने केस को लोगों के सामने पब्लिक के सामने ऐसा प्लीड नहीं किया कि वो उनको समझा सकते भाई आप क्यों नहीं हर घर में वो रेडिएशन डिटेक्टर लगा सकते, लगा के देख लो कि भाई तुम्हारे पास कोई रेडिएशन आ रही है कि नहीं आ रही, बिलावजह एक अनसीन चीज़ से आप डर के दौड़ के भाग रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कराची का डिस्टेंस कितना है, तो जब आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं ना तो उसके आगे आप 3 जोन हम बनाते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए।
वो ये होता है कि एक तो हम उसे कहते हैं एक्सक्लूजन एरिया बाउंड्री। एक्सक्लूजन एरिया बाउंड्री ये होती है कि इसके ऊपर जितनी बाउंड्री है, और वो एक प्लांट की तकरीबन आधे किलोमीटर के करीब समझें, या आधे किलोमीटर से 1 किलो, इस पे तो मेरा टोटल कंट्रोल है ऑपरेटर का। जिसको मैं कहूँगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगा बैठ जाओ, बैठ जाएगा। इसका अंदर इट्स ओनली माई ओन पीपल, हमारे अपने वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और एरिया होता है, वो कैनोप के लिए तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, शायद 3 किलोमीटर का। जो ही प्लांट पे कोई इमरजेंसी होती है ना, तो ये 3-4 किलोमीटर के एरिया को आपको फ़ौरन इवैक्यूएट करना है। और उसके बाद एक और एरिया है विच एक्सटेंड्स अप टू 9 किलोमीटर। उनको आपने बवक्त ज़रूरत ये देखते हुए कि रेडिएशन किधर जा रही हैं, मौसम कैसा है, प्लूम कितना बना है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से कितनी रेडिएशन जा रही हैं, इसकी ऑनलाइन कैलकुलेशंस होती हैं। कहाँ जाएंगी, कहाँ जाकर रेडिएशन को आप ऐसे समझ लें कि डस्ट की तरह है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रेडिएशन इमिट करते हैं, वो ज़ाहिर है कि आम गैसेस शक्ल में होते हैं, तभी तो फ्लो कर रहे हैं ना। जो सॉलिड है वो तो वहीं रह जाएंगे। तो जो गैसेस शक्ल में वो फ्लो कर रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल की तरह कहीं इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, एंड दे कैन गिव अ डोज टू पीपल। तो वो तकरीबन एरिया जो है ना 9 किलोमीटर्स तक है। तो वो कराची के लोगों को उससे होपफुली इंशाल्लाह कोई ख़तरा होने का चांस नहीं है। और ये चीज़ हमने दिखाई, फिर हमने रेगुलेटर ने उसको कंफर्म किया, ठीक है। एंड और ये पीपल हैव आल्सो विजिटेड आई डायरेक्टली सेफ्टी के देखे नहीं, मगर आई के डीजी वहाँ आके देख चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक होगा और उसमें लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। अगेन मैं एक बात कहता हूँ कि जो पुराने पावर प्लांट्स थे, जो इस ज़माने के थे, उनका तो बिल्कुल और ही सिस्टम था। उससे अवेयरनेस और कॉन्शियस नहीं थी कि आपने किस तरह एक्सीडेंट को कंट्रोल करना है। जी, लास्ट क्वेश्चन। My name is Akram Salim and I am from IR department. Sir, my question is that why not world is shifting to solar energy, even though it gives us sustainable development? And sir, you told that Europe is trying to capture Middle East. Sir, Europe has an advanced way to extract solar energy. So, in spite of all, why it is trying to capture Middle East for oil? नहीं, वो तो बेटा जो मैंने बात की थी ना, वो उस वक्त की बात की थी। देखें, ऑयल है ना, वो मैंने बात की थी तकरीबन 20 साल पहले की। उसके बाद यूएस में ना गैस निकल आई, आपको पता है कि शेल गैस जिसको कहते हैं। अब वो पता है यूरोप को, नाउ दे आर सेलिंग गैस टू यूरोप। तो अब उनको तेल का इतना सख्त ज़रूरत नहीं जितनी उस ज़माने में थी। आपको पता है 70 में किस तरह तेल की कीमतें बढ़ गई थी और कितना बड़ा क्राइसिस आ गया था। आप तो खैर साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें देन यू विल फाइंड आउट। तो अभी वो दे डू नॉट वांट टू कैप्चर मिडल ईस्ट एट ऑल। उनका मतलब जो थिंक टैंक की जो रिपोर्ट थी, उसका मतलब ये था कि हमें मिडल ईस्ट पे एक आँख रखनी है, ताकि वो हमें 1971 की कंडीशन में दोबारा ना ले जाएं कि उन्होंने सारों ने मिलकर क्लाउड बना लिया, एम्बार्गो लगा दिया, और हमें जो है उन्होंने कहा जी हम आपको तेल इतना महंगा देंगे। आपको पता है $10 बैरल का तेल निकाल रहे थे उससे पहले वहाँ से, सऊदी अरब से। उसके बाद उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर वो कम आ गई। तो वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ नॉट थिंग। अच्छा, जहाँ तक सोलर एनर्जी का ताल्लुक है, दुनिया में पहले तो सोलर एनर्जी बहुत महंगी थी, अब सस्ते हो गए हैं सोलर सेल्स, और बना रहे हैं और लगा रहे हैं, एंड लगानी चाहिए। आई फुल्ली सपोर्ट सोलर। जहाँ हाइड्रो लग सकता है ज़रूर हाइड्रो लगाएं। इट्स नॉट कि आप हाइड्रो में कोई ख़राबी है। हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया में जो लगते हैं वो वाटर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा लगते हैं, और बिजली उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपको मुफ्त में मिल रही है। बट यू आर ऑल्सो मैनेजिंग योर वाटर, यू शुड इंस्टॉल एज मैनी हाइड्रो प्लांट्स एज यू कैन। लेकिन उसकी लिमिट है। पाकिस्तान में जितने कहते हैं हाइड्रो, अगर आप सारे भी लगा लें तो 50,000 मेगावाट के लगा सकते हैं टोटल। अभी पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है ना वो 40,000 मेगावाट है जो बिजली की बना रहे हैं। और अगर आप ग्रोथ रेट लगाएं ना पाकिस्तान का, फर्ज करें आप कहिए 5% से ग्रो करेंगे, तो 14 साल में डबल हो जाएगी। तो 14 साल में 80,000 चाहिए, और अनदर 14 साल गुजरेंगे तो 1,60,000 चाहिए। और अगर आप 1,60,000 बिजली नहीं बना रहे तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ही मेंटेन नहीं कर सकते। जितने बंदे पैदा हो जाएंगे वो घरों में बिजली नहीं जला सकते, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। तो उसमें से हाइड्रो भी आ जाए। तो हम ये कहते हैं, और सोलर ऑफ कोर्स, सोलर इज़ वेरी चीप और आप इसको लगा भी सकते हैं। लेकिन सोलर का एक मसला ये है कि सोलर सिर्फ उस वक्त अवेलेबल होती है जब सूरज निकलता है, और जब सूरज नहीं निकलता तो सोलर नहीं अवेलेबल होती। तो उसके लिए आप एनर्जी को स्टोर कर लें। अब आपको पता है, बट स्टोरिंग एनर्जी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने कहाँ देखा है? यूपीएस में, जो अपने घर में आप लगाते हैं। जब आप उसमें से 1 यूनिट बिजली आप लेते हैं तो उससे पहले उसको 1 यूनिट बिजली उसमें डालने के लिए 1.5 यूनिट 2 यूनिट बिजली खर्च होती है आपकी बिजली में से।
But anyway, batteries are also becoming cheap. Large batteries are also becoming available. लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आप एक स्मार्ट कंट्री हैं, अगर आप एक अच्छी कंट्री हैं, तो आपको अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालने चाहिए. अगर आप एक एनर्जी रिसोर्स पे रहेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे. और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखें अभी यूरोप में है. यूरोप ने डिनाइड देमसेल्फ न्यूक्लियर, और उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें रशिया गैस तो दे रहा है ना, हम उनसे गैस लेते रहेंगे. अब रशिया ने गैस बंद कर दी. अब ना आप डर रहे हैं कि जो विंटर है हमारा बहुत कोल्ड विंटर होगा, हमें तो ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा. हालांकि जर्मनी को 10-15 साल हो गए सोलर लगाते हुए, तो क्यों नहीं वो उनके मसले हल हो गए. जर्मनी जो उन मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. यस, बिल्ड सोलर, build hydro, build nuclear, make a combination of all these things. Nuclear will be the base load, और solar और hydro जो है ना वो उसके ऊपर के लोड को उठाएंगे सारा. तो ये कोई नहीं कहता कि आप न्यूक्लियर ना बनाएं. जैसे मैंने कहा था हम 40,000 मेगावाट होगा हमारा, अगर फर्ज करें कि हमें अपना जैसे कहते हैं ना ड्रीम पूरा करने का टाइम मिल जाए या बन जाए, तो बाई 2050 विल हैव 40,000 मेगावाट. 40,000 मेगावाट विल बी 15% ऑफ द टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान. सिर्फ बाकी आप सोलर लगा लें 30%, 40%. बट कोल इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसकी वजह से जैसे मैंने कहा पोल्यूशन. बट यू नो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स कौन से बन रहे हैं? कोल के. ये सारी क्यों नहीं सारी दुनिया फ़ौरन सोलर पे चल जाती है और कोल लगाना बंद कर. वो वहाँ पे क्या आते हैं यूनाइटेड नेशंस में, पेरिस में, कि जी अब हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट करेंगे. एंड देन दे गो एंड ब्रेक द रूल. कोल पावर प्लांट लगाते हैं, क्योंकि बेस लोड प्लांट के बगैर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती. मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ या आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपको लगातार बिजली चाहिए. आपने सूरज देख के नहीं बिजली इंडस्ट्री चलानी, ठीक है ना. तो अगर आपकी वो पावर फेलियर होगा तो आपको नुकसान होगा. तो यू नीड ए बेस लोड, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव सोलर, यू कैन हैव हाइड्रो, यू कैन हैव विंड, यू कैन हैव एनीथिंग. और बेस लोड आइदर कोल कैन गिव यू और न्यूक्लियर कैन गिव यू, या गैस से आप ले लें. तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोल से अगर आप लेंगे तो फिर आप क्लाइमेट चेंज वाली बात भूल जाएं. हम कहते हैं दुनिया में कि जी पाकिस्तान में इतने फ्लड आ गए क्लाइमेट चेंज की वजह से और ये वो, तो दिस थिंग विल कीप ऑन गेटिंग वर्स एंड वर्स विद टाइम दुनिया में. हम तो खैर इसमें कोई बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं हैं, लेकिन दुनिया में है. और अब दोबारा थोड़ा बहुत न्यूक्लियर का रेनेसेंस शुरू हो रहा है. नाउ देयर आर कंट्रीज विच आर कमिंग बैक कि हमें न्यूक्लियर लगा लेने चाहिए.